सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 10th साइंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट सेकंड होगा। कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, ये डिफरेंट रीजेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हैं, नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। सो ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, what is the need for an element to react with other element? क्यों इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? और डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि एटम जो होते हैं एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में, वो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक फोर्स के साथ, जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने नोबल गैसेस की भी एग्जांपल कल डिस्कस की थी कि अगर हम हीलियम को लेंगे, नियॉन को, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। डियर स्टूडेंट्स, हीलियम के पास जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल है ये, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हीलियम का जो लास्ट शेल है दैट इज कंप्लीट, लास्ट शेल दैट इज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन नोबल एलिमेंट्स की बात करेंगे, all these elements they have 8 electrons in their valence shell, in their last shell, so ये भी complete है। so in nutshell, ये जो noble gases है, ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ज़ीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, इनके लास्ट शेल कंप्लीट है। दैट इज़ वाई दे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ वाई दे आर फाउंड एज मोनोएटॉमिक gases. It means that ये एक ही एटम एज एन सिंगल एंटिटी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम गैस He, आर्गॉन गैस Ar, so they are monoatomic gases. So simply ये एटम्स दूसरे एटम्स के साथ या अपने ही एटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? The reason is because they have the complete lost shell, so they do not react, they have no need to combine with the atoms of other elements. Dear students, यहाँ से हमें एक कंसेप्ट मिलता है कि एटम्स जो होते हैं they want to have their lost shell complete. अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल लेंगे या के शेल, डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस हाइड्रोजन इट इज़ इन शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि मेरे इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। So that is why this is chemically reactive. In comparison to these atoms or these elements, they are chemically inert. They do not react with other atoms easily under normal conditions. So dear students, अगर दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ या बाकी एनर्जी लेवल्स की बात करें, so they can accommodate a maximum of 8 electrons. So इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर उनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ऑटोमेटिकली उनमें एक टेंडेंसी होती है कि दे वांट टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल, दे वांट टू हैव or they want to gain 8 electrons. That is why they react. They either lose electron or gain electron or share electron during a formation of different molecules or compounds. So dear students, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्चुअली क्या है कॉज ऑफ रिएक्टिविटी या कॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एटम्स और cause of chemical combination, why atoms combine with other atoms.
So the cause is, it is actually the tendency of the atoms to complete their octet, to complete their octet, that is outermost shell with 8 electrons, or duplet, that is, i.e., outermost shell with 2 electrons, so as to acquire the stable nearest noble gas configuration. So dear students, this is the cause why metals, non-metals, or simply why atoms of any element, they react, they combine. So the tendency of atoms to complete their octet, so they have a tendency to gain 8 electrons, or either to have their outermost shell complete, that is, octet means outermost shell with 8 electrons, or duplet. I have told you that only the first energy level, that's the K shell, it can accommodate a maximum of 2 electrons. So this duplet, it applies only for hydrogen, because if we see helium, helium is having stable configuration, it's having completely uh, first shell, that is the duplet. So as to acquire the stable nearest noble gas configuration, dear students, as already discussed, these are the noble gases. They have their last shell complete. They contain 2 electrons in case of helium, and rest of these elements, they contain 8 electrons in their outermost shell. So they have their octet and duplet complete. So this is the stable configuration. That is why these elements, or these atoms, or they are chemically inert, and we observe these elements in the form of monoatomic gases. So every other atom of any element, he that wants to have these configurations of these noble gases, and this is possible when they have either 2 electrons in their last shell, or 8 electrons in their outermost shell, that is duplet or octet. So dear students, if any atom does not have duplet or octet, so what he can do, he have to either lose electron, he have to either gain electron to have the outermost shell with 8 electrons, or he can share electrons. So these are the 3 ways by which atoms, so atoms of different element, it can either lose electrons, it can either gain electrons, or it can either share electrons. And what is the outcome is that after these 3 processes, the atoms have the duplet or octet, that is 2 or 8 electrons in their outermost shell. So this is, dear students, the concept why atoms of different elements react, or why they combine to form different compounds and molecules. So dear students, this was the part second. In part third, we'll discuss how a metal reacts with a non-metal, how different non-metals react with each other, and we will discuss it with some examples so as to clear the concept. I hope that you have easily understood what I have told you about the topic why atoms combine, and why these noble gases, why they are chemically inert,
why they act as monoatomic gases. This is the important and the basic topic. Dear students, I hope that you will like this class. Thanks.